British in the right top corner, left, right, left, towards the pole, that so that permanently it remains engraved in the mind of the people of India that they were ruled something. Wisdom prevailed, and they said nothing doing. This is free India's flag. We cannot incorporate into even the smallest Rasidi ticket size any other flame. And since 1947, 15th August, when the flag came down, British flag, and this went up at the same time, simultaneously, since then, always remember, you give up your life, you fight out the battle for what? Not a piece of flag, but that flag is your identity, my identity, and nation's identity, and it has always been so with all the countries. बिल्कुल। और आइए एक बार फिर से हम संसद भवन परिसर में रुक करते हैं। ताज़ा तस्वीरें भी हमें मिल रही हैं, जो तमाम सांसद हैं, तमाम गणमान्य अतिथि हैं, वो आना शुरू हो गए हैं। सूरज मोहन झा इस समय हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सूरज, अगर आप हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं और अपनी आंखों से आप पूरा मंजर वहाँ देख पा रहे हैं, इस समय जाहिर तौर पर हर देशवासी के लिए गौरव का पल, थोड़ा हमें बताइए कि कौन-कौन से make your life easier. And I'm told every member of parliament will also get an office, which I think is remarkable. And we're getting these live visuals from inside the Parliament House, in front of the Gajdwar where the event is taking place. The Deputy Chairman of Rajya Sabha, Mr. Harivansh, has also arrived. He'll be followed by the Lok Sabha Speaker there. Then there will be a guard of honor by the Parliament Security Group, and then the chief guest of the event, that is the Vice President and Chairman of Rajya Sabha, will also arrive in the next few minutes. Professor Lal, you know, your views there on the similar aspect which we were talking about with Sujit ji here, that one is use of technology, two is, of course, encompassing the various elements of the beloved country, which, you know, and various components by, I mean, art, culture, history as well. It's not even one aspect has been left, you know, untouched there in the new building. Sudesh ji explained beautifully, and I can tell you that most of things have been covered, but I will add a very small thing to it, and that's a very important factor. Building, as I said, that it was started in 1921 and it was inaugurated on 18 February 1927. We must realize two things. It was wonderful building, best designed building of its own time. When the building was constructed, there were no air conditionings, there were nothing like, you know, elementary electricity. There was nothing like audio system, video system and all that. Over the time, all these things were added which were not meant to be there. Number one. Number two, as a heritage man, director of a heritage institution, I had the privilege of inspecting the building from the point of view how long it can survive in its present form. Seepage was there, overloading is there, all kinds of repairs have been done which should not have been done in normal course from heritage point प्रोफेसर of लाल, view. आपकी बात हम जरूर आगे सुनेंगे, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। सीधी तस्वीरें इस समय संसद भवन परिसर से हम देख रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस समय संसद भवन परिसर पहुंच चुके हैं और बस कुछ ही पलों में जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है संसद के नए भवन के गजद्वार से कुछ ही पलों में हम होता देखेंगे। हम देख पा रहे हैं राज्यसभा और लोकसभा के महासचिव भी लोकसभा अध्यक्ष के पीछे हमें दिखाई दे रहे हैं। अपने आप में एक ऐतिहासिक और गौरव का क्षण भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संसदीय प्रक्रिया और प्रणाली के लिए। The guard of honor by the Parliament Security Group being inspected by the Speaker of Lok Sabha. General Threat! Salami! Chuck! Good! Bagad!
माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं शत शत वंदन। कुछ ही समय में हमारे बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि मेहमान, हमारे देश के उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ जी अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराएंगे। विश्व Live visuals on your screens. Lok Sabha Speaker Om Birla elected the guard of honor by the Parliament Security Group in front of Gaj Dwar, where the new building of Parliament, where the flag hoisting event will take place. All dignitaries have arrived. Ministers, members of Parliament from all political parties, the Deputy Chairman of Rajya Sabha, the Speaker of Lok Sabha, and now will witness the arrival of the Chairman of Rajya Sabha and Vice President, Sir Jagdeep Dhankar, in a short while. These live visuals coming to you from Sansad TV, from inside the Parliament House complex. You can see on the right side of your screen members of Parliament sitting across the dais there, and the cavalcade of Chairman of Rajya Sabha now entering the Parliament House complex. This event significantly taking place a day before the special session of Parliament, which begins on Monday, that is 18th. अब हमारे बीच अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराने आ रहे हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ जी। और साथ ही मेरा अनुरोध पीडीजी सीआरपीएफ द्वारा राष्ट्रीय सलामी हेतु। God General Threat Salami Chuck God Bagal Chuck हमारे उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा सभापति हमारे बीच मौजूद हैं। मान्यवर, आपका हार्दिक स्वागत है। भारत का तिरंगा केवल 3 रंगों को स्वयं में नहीं समेटे है। हमारा तिरंगा हमारे अतीत के गौरव, वर्तमान की कर्तव्यनिष्ठता और भविष्य के सपनों का भी एक प्रतिबिंब है। तो चलिए इस पल को सदा के लिए यादगार बनाएं और मेरा सादर अनुरोध माननीय उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा सभापति श्री जगदीप धनखड़ जी से कि आप कृपया ध्वजारोहण के लिए आएं। साथ ही माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि इस अवसर पर आपकी उपस्थिति का विनम्र आग्रह है।
तिरंगे का सम्मान रोम रोम में इस कदर बस गया, तिरंगे का सम्मान रोम रोम में इस कदर बस गया, जहाँ भी देखा मैंने तिरंगा, सलाम के लिए हाथ खुद ब खुद उठ गया, हाथ खुद ब खुद उठ गया। आप सभी से राष्ट्रगान के लिए सादर अनुरोध। God! Rastas, Lord! Salamai! Chuck! God! Bagal! Chuck! अब मेरा सादर अनुरोध हमारे मुख्य अतिथि राज्यसभा के सभापति एवं हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी से कि वे गार्ड कमांडर अभिनव पांडे जी को फ्रूट बास्केट देकर सम्मानित करें। मान्यवर, इसके साथ ही आपसे सादर अनुरोध सेंट्रल बैंड सीआरपीएफ के बैंड कमांडर भीम सिंह जी को फ्रूट बास्केट देकर सम्मानित करें। इसी के साथ आपसे मेरा पुनः अनुरोध जीसीए दिल्ली बैंड मास्टर रमाकांत शर्मा जी का सम्मान करें, उन्हें फ्रूट बास्केट देकर। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। तन समर्पित, मन समर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहती हूँ मातृभूमि तुझे कुछ और भी दूँ, चाहती हूँ देश की भूमि तुझे कुछ और भी दूँ। आज एक बार फिर हम सभी इतिहास के इस पल के साक्षी बने, जहां हम सब एकत्रित हुए इतिहास को जीने, इतिहास में सदा के लिए स्वर्ण अक्षरों से अंकित होने। There it is, live visuals coming on your screen where you can see both Chairman of Rajya Sabha and the Speaker of Lok Sabha now interacting with the other dignitaries present there, members from... हर देशभक्त तन मन धन लुटाता है,
तिरंगा ही देश की बुनियाद को मजबूत बनाता है। और देखिए कितने गौरव के साथ सीधी तस्वीरें संसद भवन परिसर से, जहां संसद के नए भवन के गज द्वार पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ध्वजारोहण किया है। और इस समय हम देख पा रहे हैं कि राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष तमाम गणमान्य अतिथियों से मिलते हुए, अलग अलग दलों के नेता इस ऐतिहासिक पल के गवाह और साक्षी बने हैं। देश की आन बान और शान, उसका राष्ट्रीय ध्वज, और हमारे देश के लिए तिरंगा, ये ध्वज बेहद महत्वपूर्ण है, गौरवपूर्ण है। आम नागरिक से लेकर देश के वीर जवान सभी तिरंगे के सम्मान में अपने प्राण तक न्योछावर करने को तैयार रहते हैं। तो आज इस आन बान शान की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके सामने एक नया अध्याय, एक नया इतिहास। आज ध्वजारोहण संसद के नए भवन के गज द्वार पर फहराया गया है। And as our panelists were also earlier pointing out, Preeti, Professor Lal, you were saying earlier another significant milestone, another chapter added into that glorious history of the journey of Parliament with today's event. Yes, it's very, very proud moment. But what I expect now is, as the law of development says, we need to change. I do hope that once we enter into the new building, we become a little more responsible. We means the members. There should be less of boycott. There should be more of discussion. You can always get attention by being more intense, by being more relevant, by being more concerned about the nation than you get the attention by boycotting the parliament. I hope that they are going to be more sensible, thinking in terms of every day crores of rupees are being spent. And when the days are washed out, it's not the washed out of their time. It's washed out of the resources of the country and country's time. They have to be responsible. In fact, we'll come back to you, Sujit, but we are again looking at live visuals coming in from the Gaj Dwar of Parliament House, where we can see both the chairman of Rajya Sabha and Speaker of Lok Sabha now, after having interacted with all the dignitaries being present there. और इस समय हम देख रहे हैं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज संसद के नए भवन के गज द्वार पर ध्वजारोहण के बाद अब हम देख रहे हैं वो प्रस्थान करते हुए। लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव भी इस मौके पर मौजूद हैं। अलग अलग दलों के नेता इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने हैं। ये सीधी तस्वीरें संसद भवन परिसर से, जहां एक तरफ हमारा गौरवशाली इतिहास तो दूसरी तरफ नए भारत का नया संदेश, संसद भवन की नई इमारत। In fact, we can see in the visuals a lot of other members of Parliament being present there. Leader of the House in Rajya Sabha, Piyush Goyal, and Union Minister also there. Parliamentary Affairs Minister, Minister of State for Parliamentary Affairs, Deputy Chairman as well of Rajya Sabha. Members cutting across party lines also present.
तो सीधी तस्वीरें इस समय हम देख पा रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही पलों पहले आपको बता दें कि जो संसद का नया भवन है उसके गज द्वार पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के हाथों ध्वजारोहण का कार्यक्रम। और इस मौके पर संसद भवन में इस कार्यक्रम में तमाम दलों के नेता शामिल हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अब संसद भवन परिसर से रवाना हो रहे हैं। एक तरफ संसद का मौजूदा भवन और दूसरी तरफ संसद भवन, नए संसद भवन की इमारत हम देख पा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ संसद भवन परिसर से रवाना होते हुए। So we witnessed that ceremony out there. Professor Lal, you know, since this event took place at Gaj Dwar of the new building of the Parliament House, that reminds me of something which our viewers might be very interested in knowing, and no other better person to explain this other than an historian, eminent historian like yourself. The significance behind the names which have been given to these dwars. One is Gaj Dwar, then there are 4 others as well. Why and how? I will come that, but give me half a minute because we were talking about the achievements. Okay. I would like to point out 2 very significant points, of which he has also been part of. How great achievements have to be seen and also visualized by parliamentarians themselves. 2 events are very important. One is GST. Everyone stood in the midnight hall, supported GST, which has finally changed the shape of economy of this country. Each and every parliament member is responsible for it. Kudos to them, and they